Hello and welcome to Study with Sudhir, your own digital classroom. Time for the sense organs, and in this video we are going to learn about the ear. कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि आपने ईयर का पूरा समझ लिया है. Okay, so let's get started with what happens. Why do we need these 2 ears? Why do we need these 2 ears? It is for the sense of hearing and the sense of balance. यानी कि बैलेंस को लेकर के भी हम हमेशा सोचते हैं कि कान सिर्फ सुनने के लिए होते हैं. नो, द इयर्स ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल कि आपका बैलेंस ठीक रहे, आप डगमगाए नहीं, दैट यू आर एबल टू वॉक विदाउट फॉलिंग. योर सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो शेयर, सपोर्ट, subscribe. That's what you need to do to study with Sudhir so that you get more such quality content. Okay, so let's get started. अब इसका बंदे का देखो, इसको सुनाई भी पड़ रहा है और इन्हीं कानों से उसका बैलेंस भी नहीं बिगड़ा हुआ है. So be like him. He's having all the resources on the table and he's sitting and studying. Okay, so this is what the ear essentially looks like. Okay, this is what the ear looks like. हमारे कान के अंदर का पोजीशन ऐसा है. तो ये जो बाहर का पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, जो कि हमको बाहर विजिबल होता है, जिसको पकड़ के आपके मम्मी या डैडी आपको पकड़ते हैं, करेगा ऐसी शरारत तो आपके कानों का इस्तेमाल होता है. कानों का तीसरा इस्तेमाल ये है, एक तो ऐनक को पहनने के लिए, राइट. चौथा, आपको आपके कान पकड़ के आपको पनिशमेंट देने के लिए. तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल के लिए नाक, कान काफी काम आते हैं. सो दिस इज द ऑरिकल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द पिन्ना, PINNA. सो दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर और उसके अंदर देयर इज फुल पूरा मशीनरी लगा के दिया है भगवान ने. पूरा मशीनरी, पूरा एपरेटस अवेलेबल है ताकि आपको पूरी तरह से सब कुछ सुनाई दे और आपका बैलेंस भी बना रहे, राइट. सो दिस इज द एंटायर इनसाइड पार्ट where you have the bones, the malleus, the incus, the stapes. You have the auditory canal जहां से waves जाते हैं और ear drum से टकरा के ताकि आपको सुनाई पड़ता है. अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपको सुनाई पड़ रहा है, मेरे कानों में खुद मेरी आवाज भी सुनाई पड़ रही है, right? It's all happening because of the air waves and it is going and hitting the eardrum and it is being processed. I'm able to hear myself. You are able to hear me, right? Now, ये तो हो गया इनसाइड का उसका पूरा apparatus. So अभी let's go inside and understand with the help of notes. पहले आउटर ईयर पे फोकस करते हैं. आउटर ईयर consists of pinna, जिसकी मैंने बात की. This part is the pinna, also known as auricle, but pinna is the more common name. इसका इस्तेमाल आप अपने आंसर्स में कीजिए. And the passage auditory canal leading to eardrum, which is the tympanum, right? So अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस पार्ट इज द ऑडिटरी कैनाल. ये बाहर का कान है. अंदर जब जाता है, अंदर जब आप थोड़ी उंगली डालेंगे तो यू विल फील सम काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग इनसाइड, राइट. या कभी साफ करने के लिए ईयरबड से जब आप साफ करते हैं तो अंदर जाता है. सो इट्स अंदर एक सुरंग की तरह बनी हुई है. दैट इज द ऑडिटरी कैनाल, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिना. इसका फायदा क्या है? मैंने फायदे तो गिना है. ऐनक डालने के लिए, चश्मा डालने के लिए, या पनिशमेंट के लिए, कान पकड़ के आपको पनिश करने के लिए. लेकिन इसके अलावा भगवान ने इन दोनों चीजों के लिए नहीं बनाया था, राइट. सो विजिबल पोर्शन ऑफ आउटर ईयर, इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड चैनल्स देम इनटू द ईयर कैनाल व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ फनल और अ टनल वेयर द साउंड इज एम्पलीफाइड. एम्पलीफाइड का मतलब वो आवाज ज्यादा क्लियरली आपको सुनाई पड़ती है, राइट. सो जैसे अगर आप माइक गाना सुनते हैं, राइट, तो आप एयरपॉड्स डालते हैं, ईयरपॉड्स डालते हैं या कोई दूसरा ये डालते हैं, तो इसके अंदर डालते हैं ताकि आवाज सीधी के साथ सीधी आपके पिन्ना से अंदर उस ऑडिटरी कैनाल में जा सके. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द पिन्ना. इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, ये वाला पोर्शन, कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ स्किन, ऑल्सो एडिपोज एंड फाइब्रस टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज. सो इस पोर्शन में अगर आप कभी आप, especially the boys, even the girls for that matter, haircut के लिए जाएंगे, if it's a careless person, barber, he will cut this thing. So जब भी यहाँ पे कट करते हो, you have to be little careful because if he's also looking at a TV या किसी से बात करते हुए या फोन पे बात करते हुए कर रहा है, वो कान काट देगा तो immediately खून निकलेगा. खून क्यों निकलेगा? Because it has blood capillaries
out there, right? What type of tissue forms the framework of the external ear? The connective tissue. इस बात का ध्यान रखिए, it may not be in your book, but this is something, because I'm going to give you a lot of the questions, because अभी critical reasoning questions काफी आएंगे. तो ऐसा नहीं कि मेरे सिलेबस के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ये सोच के मत जाइए, because कोई भी interconnected kind of a question can come. So this is something which I found. A connective tissue, because the cartilage is a dense connective tissue. उसको connective tissue कहते हैं. So what type of tissue forms the framework of the external ear? What causes the presence of अंदर you have the presence of wax in the ear, right? So what is the function? उसका फायदा क्या है? इतनी ज्यादा wax को क्यों लगा रखा है कान के अंदर? In the auditory canal, what is the purpose? The canal contains ceruminous glands which are modified sweat glands. Okay, sweat glands modified होते हैं, उसको ceruminous glands कहते हैं, and they secrete wax. Cerumen is what it is called. Hairs are also present. वहां बाल भी रहते हैं, are also present at the opening of ear canal. Wax and hair are to prevent entry of foreign objects like insects, ताकि कोई कीड़े मकोड़े या मच्छर या मक्खी वगैरह तुम्हारे कान के अंदर ना घुस पाए. So it will prevent, the wax will kind of hold, catch the insect, and the hair will also be some kind of a barrier for the entry of any kind of insects into the ear. Otherwise, just imagine what discomfort you will have if insects start getting into your auditory canal. Just imagine how discomforting it will be. So isliye you have the presence of wax, you have the presence of hair in the ear. What separates the middle ear from the outer ear? Middle ear, because you have three parts: outer ear, middle ear, inner ear. इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. तो middle ear और outer ear को क्या separate करता है? The eardrum. The eardrum, which is one of the most important parts of the ear, or tympanic membrane, which is a thin membrane lying close to the auditory canal. तो auditory canal के बिल्कुल पास में यहाँ पे tympanic cavity जो आप देख रहे हैं, the tympanic membrane, the green color one, this is coming at the end of the auditory canal. So this is like the outer portion. यहां से inner middle portion शुरू हो जाता है, right? Has the diameter, okay, इसका जो auditory canal है, इसका this thing is also ये जो what separates the middle ear, the eardrum has the diameter of a pencil. एक pencil का diameter उतना ही होगा. So if you have a pencil like this, उसका diameter इतना सही होगा, and it is stretched like a drum head. Now, tympanoplasty is a surgical technique to repair a defect in the tympanic membrane by placing a graft. अगर आपके eardrum में कुछ गड़बड़ी हो जाए, उसमें कुछ wear and tear कुछ हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, उसको टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं. प्लीज रिमेंबर these terms from the point of view of MCQs. It is to repair a defect in the tympanic membrane by placing a graft. Now let's come to the middle ear. Middle ear is an air-filled tympanic cavity that is connected to pharynx. Pharynx मतलब the throat का area, right? Through the eustachian tube. So middle ear is an air-filled, जो middle portion of the ear है, वहां पर tympanic cavity है, और ये tympanic cavity का connection सीधा आपके गले से, throat से, pharynx से भी रहता है through the eustachian tube. इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. हाउ बिग इज द साइज ऑफ दिस कैविटी? इट कैन होल्ड अप टू 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब? टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. एज आई सेड, इस पे क्रिटिकल रीजनिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो भी मैं अभी बताऊंगा, बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड द क्वेश्चंस, ताकि आप पढ़ते रहें, साथ साथ रिवीजन भी होती रहे, ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर में तैयार हो जाए. सो इट टेंड्स टू, जो प्रेशर है उसको एक तरह से, ताकि यू नो इफ देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर प्रेशर इनसाइड योर ईयर ड्रम, इनसाइड योर एंटायर ईयर एपरेटस, उससे आपको काफी तकलीफ हो सकती है. दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन यू आर फ्लाइंग इन द एयरक्राफ्ट. जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है या एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला होता है, उस समय पर आप पाएंगे आपके कान के अंदर का प्रेशर काफी तकलीफ देता है, बिकॉज द प्रेशर इज नॉट इक्वलाइज्ड. सो द बेसिक पर्पस इज टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम, द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो होता क्या है, समटाइम्स इंफेक्शन इन द थ्रोट लीड्स टू ईयर इंफेक्शन.
आपके गले में इंफेक्शन है, उससे कभी कभी होता क्या है कि आपको फिर ईएनटी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि ईएनटी का क्या मतलब हुआ, ईयर नोज थ्रोट. सो यू विल हैव टू गो टू एन ईएनटी डॉक्टर टू से कि मेरे गले में दर्द है लेकिन मैं अभी कान में इंफेक्शन हो गया है. ये इसलिए होता है बिकॉज द यूस्टाचियन ट्यूब इज कनेक्टेड विद द फेरिंक्स, राइट. देन उसके बाद आते हैं द 3 टाइनी बोन्स कलेक्टिवली नोन एज द ईयर ऑसिकल्स. क्वेश्चन थोड़े इसके बाद करेंगे, पूरा पोर्शन कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूं. ईयर ऑसिकल्स, मैलियस which is the largest ear bone. ये again MCQ point of view से याद रखना, ये malleus incus stapes काफी favorite है board examiners का. It is the largest ear bone. Hammer which it is shaped हथौड़े की तरह है. Okay. Incus हुआ दूसरा. Stapes which is attached to each other. Incus और stapes attached तीनों को. In fact, this is how it looks. The auditory ossicles, the malleus ये हथौड़े की तरह है, ऐसा हथौड़ा नीचे पकड़ेंगे, ये हथौड़े की तरह है. ये इनकस है और ये नीचे स्टेप्स है. आई होप द फिगर्स आर क्लियर. या सो ये दिस इज हाउ द 3 ईयर ऑसिकल्स लुक. दिस इज द लार्जेस्ट बोन. जो स्टेप्स है दैट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द एंटायर बॉडी इटसेल्फ. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. यानी कि मैलियस को बोलते हैं हैमर बिकॉज वो हैमर शेप में है, इनकस को बोलते हैं एनविल और स्टेप्स को बोलते हैं स्टिरअप. ये याद रखना. So HAS has, ये हो गया MIS. So MIS becomes HAS. These are the 2 other names. So the handle of malleus is attached to the inner surface of the eardrum. So that's how, because everything, it's not like कि ये सारे जो different parts of the पूरा ear apparatus है, ये सब एक तरह से जुड़े हुए हैं ताकि आपको जो sound का passage है सीधा जाए. It's not like they are disconnected from each other. ऐसा नहीं है. They are all interconnected with each other. Then its opposite end is connected to the incus, which is also joined to stapes, which is the smallest bone of the body. So malleus, incus, and stapes are kind of connected to each other. The flat part of stapes, जो stirrup है, it is attached to the oval window. Now there are 2 kinds of windows which are mentioned: the oval window and the round window. So oval window is a membrane covered opening leading to the inner ear. Now अभी हम मिडिल, ये सब तो हम मिडिल ईयर का पोर्शन पढ़ रहे हैं. जो कान का बीच का पार्ट है उसे इनर ईयर की तरफ जाने के लिए ओवल विंडो का इस्तेमाल किया जाता है. So the flat part of stapes is attached to the oval window, which is a membrane covered opening leading to the inner ear. इसके बाद आता है round window, which is the second opening, but the oval window is the more significant part. This is connects middle and the inner ear. So दोनों का role वही है, to connect from the middle ear to the inner ear. Now, what is the function of the oval window? The sound waves cause, see in all, why I have written it in question and answer form, ताकि इसमें जो भी language का इस्तेमाल किया गया है आप उसी language का इस्तेमाल करते हुए using the keywords आप लिखें ताकि आपको एग्जाम्स में full marks आए. So sound waves keyword, cause vibration of tympanic membrane keyword, and the ossicles transmit those vibrations to the oval window. Okay, so that's the role which leads to movement of fluid within the cochlea and activation of receptors for hearing. So if you have to get full marks, you need to write the answer like this. I repeat, the sound waves cause the vibration of the tympanic membrane and the 3 bones, the ossicles, malleus, incus and stapes. They transmit those, उस vibration को, यहां से मेरी आवाज आई, उस पर टकराई, and then they transmit the vibrations to the oval window. उस oval window, because the oval window is thereafter connected to the inner ear, which is the बिल्कुल अंदर की बात, right? Which leads to the movement of the fluid. Cochlea, जिसके बारे में हम inner ear में पढ़ेंगे, उसके अंदर जो fluid है, उस fluid का movement cause करता है, and that activates the receptors for hearing. और उससे जो सुनने के जो रिसेप्टर्स वहां पे लगाए गए हैं उसको उसका एक्टिवेशन होने के साथ साथ आपको सुनाई पड़ता है. जस्ट इमेजिन, as I'm speaking I'm able to hear it. So just imagine कितनी तेजी से ये पूरी प्रक्रिया होती है, कितनी तेजी से this entire process takes place. Fascinating, isn't it? So what is the function of the ear ossicles? जो malleus incus stapes हैं या हैमर एनविल स्टिरअप है, इसका बेसिक रोल क्या है?
they act as a lever that transmits sound waves from external ear to the internal ear because they are in the middle part. तो यहाँ का अंदर ले जाने की बात के लिए they are the ones, वो वहां के चौकीदार हैं, right? Which is the smallest bone of the body? मैंने अभी भी बताया, stapes. Does the eustachian tube remain open or closed? Now this is the interesting question. Now the tube normally remains closed, but it opens at the time of swallowing or yawning. यानी कि जब आप उबासी ले रहे हैं, when you are yawning or when you are swallowing something, to equalize the air pressure between the atmosphere and the middle ear and to allow air to pass between middle ear and throat. So normally it remains closed, लेकिन जब आप swallow करते हैं, कुछ अंदर को लेते हैं, even if it is just saliva or water, or you're yawning, at that time it opens up. Okay, and why does it open up? So that the air pressure equalizes, and this is important. I'm coming to that point. It is to equalize the air pressure between the atmosphere and the middle ear and to allow the air to pass between the middle ear and the throat. So both activities cause contraction of muscles connected to the tube, enabling it to open to small amounts of air. Now इसका फायदा होता है aircraft के टाइम पे. What I said, no? When you're taking off and more importantly when you're landing. When your ear feels blocked on the aircraft, why are you asked to swallow saliva? Okay, this is a critical application question. आपसे कहा जाता है कि नो कि you just जो भी saliva है आपके इसमें थूक है, you just keep swallowing. You keep doing that, you will feel better. पहले पता नहीं होता था, and children, babies, you will see infants वगैरह करके चिल्लाते हैं, रोते हैं aircraft में because they don't know what to do, right? They are not aware of what to do. So they keep crying at that time because their ears are paining. But adults, we can be told, okay, you just keep swallowing the saliva because that's what helps to equalize the air pressure. Because swallowing opens the eustachian tube, which is otherwise closed, and allows air to flow into or out of the middle ear. This helps equalize pressure on either side of the eardrum, और आपका जो pain है वो खत्म हो जाएगा. It will not make you uncomfortable. Blocked eustachian tube can cause vertigo, pain, hearing difficulty, right? So that's what is the reason why you are asked to swallow or yawn in an aircraft if it is causing pain to you while the aircraft is landing at an airport. Now let's come to the inner ear, which is also called the labyrinth. ये इसके दो पार्ट हैं. पहला है the bony labyrinth, दूसरा है membranous labyrinth. Now bony labyrinth होता है consists of a vestibule, 3 semicircular canals. ये vestibular semicircular canals जो आपको दिख रहा है ना, ये violet कलर के, these are the 3 semicircular canals and spirally coiled cochlea. The cochlea is this is the cochlea. ये जो portion दिख रहा है बड़ा सा गोल गोल, this is the cochlea. So इसमें cochlea and the semicircular canals are the important ones, especially the fluid which is there in these parts of the body of the ear. Cochlea, it is filled with perilymph. So bony labyrinth consists of a vestibule, 3 semicircular canals and spirally called cochlea, which is filled with perilymph. The membranous labyrinth is surrounded by, uske bony labyrinth is around the membranous labyrinth, and it includes sensory receptors responsible for balance and hearing and include organ of Corti filled with endolymph. तो उसमें perilymph है cochlea और semicircular canals में. यहाँ पर in the membranous labyrinth it is filled with endolymph. Okay, so now what I'm going to do is that I'm going to do once and then I'm going to revise it at the same time ताकि आपका पूरी तरह से revision भी हो जाए, याद रहेगा. तो पहले चलते हैं cochlea and the semicircular canals के ऊपर. Okay, cochlea is a spiral shaped, it looks like a snail shell. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया इसमें, it looks like a snail shell. इसके बाद में भी कुछ बनाया है क्या? या तो यहां पर इस डायग्राम में देखिए, आई होप इट इज a little more clear. या दिख रहा है ना? तो राइट साइड पे आप देख रहे हैं दैट इज द कॉक्लिया. ऊपर हो गया द सेमी सर्कुलर जो कैनाल है वो आपको दिख रहा है, राइट? द कॉक्लियर डक्ट, राउंड विंडो यू आर एबल टू सी डाउन बिलो, राइट? एंड oval window you are seeing above, just above the round window. So this is the round window, this is the oval window, everything connected to the inner part of the ear. This is the cochlea, this is the semicircular
canal. All these diagrams will be in your book also, so keep referring to the diagrams ताकि आपको समझने में आसानी हो. So cochlea is a spiral shape, looks like a snail shell, 2.5 turns kind of thing. There's 3 parallel canals in the inner winding cavity. First one is the vestibular canal, the second one is the median canal, and the third one is the tympanal canal. VMT, इस बात को याद रखिए, ये 3 canals को याद रखना जरूरी है, especially the median canal, which has a fluid called the endolymph. The other 2 are filled with perilymph. Okay, so उसमें perilymph only median canal में this is significant because इसमें endolymph होता है. The organ of Corti are present in the median canal. So median canal, as I said, is more important because इसमें organ of Corti है. This organ has sensory cells and again plays an important role. Now, what's the function of the organ of Corti? To convert or transduce, this is a technical term, but convert will be okay, sounds into electrical signals, which is why I said the organ of Corti and the median canal where it is present is important. So it converts, which is why I've written it in question and answer, ताकि आपको register करने में ज़्यादा आसान होगा when it is written in question and answer form instead of because when it is written just text में देखेंगे तो एक रटने की टेंडेंसी आती है. इसमें अगर आप पढ़ेंगे 2-3 बारी आपके सॉफ्टवेयर में ये एम्बेड हो जाएगा. To convert sounds into electrical signals, the nerve fibers arising from these sensory cells join the auditory nerve and the sensory cells lie on the basilar membrane. Okay, so this is as far as the organ of Corti is concerned, what its role is within the median canal. Now, so how is the inner ear involved in the balance of the body? Now let's come to the balance of the body और इसके बाद में उसका revision भी करूंगा. So the other part of the inner ear is a set of 3 semicircular. एक तो ये तो हो गया cochlea का, उसके बाद semicircular canals पे आते हैं. So they are arranged at right, like जहां पे अभी देखा ना. So it is like arranged at right angles to each other. So one is horizontal, the other 2 are vertical. So one end of each canal is widened to form an ampulla which contains sensory cells for dynamic balance when body is in motion. तो अगर मैं चल रहा हूं और मैं कहीं पर गिर नहीं रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मेरा एम्पुला ठीक से काम कर रहा है. Okay, my dynamic balance is being maintained, right? It's not just about hearing, but this is also taking care of which is why what happens, like when you are moving up and down, you go up and down, and at that time, आपका balance थोड़ा सा डगमगाए, which means that, this part of your ear apparatus is kind of giving some kind of trouble. So one end of each canal is widened to form an ampulla. Which contains sensory cells for dynamic balance when body is in motion. The nerve fibers from them join the auditory nerve. So auditory nerve को वहां से जो nerve fibers होते हैं, they join. The short stem that connects the semicircular canals to cochlea has 2 parts. One is called the utriculus, the other one is called the sacculus, and these 2 parts also contain sensory cells for static balance when body is standing. So both when body is standing और मैं गिर ना जाऊं उसका भी ध्यान रखते हैं. When I'm walking and I'm able to maintain my balance, उसका भी ध्यान is kept by this part of the entire ear structure. The otoliths are particle of calcium carbonate which help in the balancing of the body. This is again one point which I'm just putting it out for MCQs or any of the other short answer questions. Now let's look at the revision part of it. Okay, now I'm going to come to how does ear help in hearing. अभी तक हमने पढ़ा, right? We'll just do a quick recap, one-stop revision kind of a thing. The pinna collects the sound waves and conducts them through the external auditory canal. They strike on the eardrum, which is set to vibration. इस तरह से आप इस बंदे को सुनाई पड़ेगा. जो भी मैं बोल रहा हूं इसको सुनाई पड़ेगा because this is the entire procedure that is taking place as a result of the ear. What is the process of hearing? The eustachian tube equalizes the air pressure on either side of the eardrum. It allows it to vibrate freely. Vibrating eardrum set 3 ossicles into vibration. Malleus incus stapes को vibration में करता है. The vibration of the stirrup, which is the smallest bone, जो छोटे से छोटा bone भी काम आता है, जो stapes है या stirrup है, transmits vibration to membrane of the oval window. That sets the fluid in the cochlear canals into vibration. So everything starts vibrating
and then the vibrating movements of the fluid stimulate the sensory cells of cochlea, and those impulses are transmitted to the brain via auditory nerve. So these three boxes जो मैंने लिखा है, these three are the steps which are involved in the entire process of hearing. आपके पूरे सुनने की प्रक्रिया में ये इस ऑर्डर में होते हैं. तो आप इन सभी चीजों को 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स में आप लिख लीजिए, और जो कीवर्ड्स हैं, यूस्टेशियन ट्यूब, इक्वलाइजिंग एयर प्रेशर, ट्रांसमिट्स वाइब्रेशन टू मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो, impulses, auditory nerve, all these keywords जो हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए. You revise it again after 2 days, आपको याद होता रहेगा. The more you revise, you'll be able to all these different words जो पहली बार सुनने में आपको थोड़े से daunting लग सकते हैं, लेकिन आप जितनी बारी रिवाइज करेंगे आपको याद रहेगा from the point of view of short answers, long answers or even MCQs. दूसरी बात एक और, जो पूरा ईयर के जो जितने भी डायग्राम्स हैं उसको ड्रॉ करके भी आप प्रैक्टिस कीजिए. इट विल हेल्प यू in better understanding and in any diagram based questions. Now, which is why I'm doing this revision, quick revision, ताकि जितना भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको, it will help you in better retention. Our sensory endings can receive vibrations only of frequency between 20 and 20,000 hertz. Now, this is an important point. Most common are between 1000 and 4000 hertz. लेकिन जो कुत्ते होते हैं, dogs, they can hear sounds of higher frequency. तो हमारा जितना भी फ्रीक्वेंसी है, इट इज इन जनरली इन द रेंज ऑफ 1000 to 4000 हर्ट्ज, बट हम बिटवीन 20 and 20,000 हर्ट्ज तक का भी सुन सकते हैं. राइट नाउ व्हेन वी टर्न द हेड in different directions, fluid inside the semicircular canals also shake. Okay, now when she's playing with the football, you will find when she's playing with the football, the fluid inside the canals, that's also shaking, right? This moving fluid pushes against the sensory hair cells to brain via the auditory nerve. So then the sensory canals in the semicircular canals, sensory cells in the semicircular canals are concerned with dynamic equilibrium. Dynamic means when you are moving. Static is when तुम एक जगह पर खड़े हो, right? While body is in motion. Sensory patches located in the utriculus and the sacculus, जिसका कि मैंने जिक्र किया end में, take care of the static balance. So static balance is taken care by the utriculus and the sacculus. The dynamic equilibrium is taken care by this sensory cells in the semicircular canals. Now इस तरह का एक डांस हो रहा है, This is again another thing which can come as a critical application question. आप मूव कर रहे हैं, आप चक्कर मारते जा रहे हैं, राइट? आप चक्कर मारते जाएंगे, राइट? अभी 2 चक्कर मारे, चक्कर आ गया, राइट? So why do you get this? That's being asked. Why do you get this kind of a thing that you may just fall down now? So what happens when you spin around? So the fluid in the semicircular canals continue to spin for a short time even after you have stopped. मैं 2 चक्कर लगा के रुक गया, लेकिन I was feeling as though मैं इस तरफ गिर जाऊंगा. Why? बिकॉज आपने तो बॉडी तो रुक गई है, लेकिन जो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड है, दैट इज कंटिन्यूइंग टू स्पिन, दैट हैज नॉट बिकम स्टैटिक फॉर अ शॉर्ट टाइम इवन आफ्टर यू स्टॉप स्पिनिंग. सो यू फील डिजी, योर आईज परफॉर्म टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल्स. सेम इज द केस विद सी सिकनेस या एयर सिकनेस, कि जब आप एयर सिकनेस जाए या कार में कहीं जा रहे हैं लंबी जर्नी में, सम पीपल हैव दिस कार सिकनेस, many pets have, many dogs have car sickness, and you end up vomiting, right? So seasickness is very common among sailors and any other people. So this is what happens when your body is in motion. So this question and answer from a critical answer reasoning point of view, please make a note of it. Okay, so with this we come to the end. So don't forget to share, subscribe and support SWS if you are looking for more such detailed explanation videos and content. Okay, tata, bye bye. Thank you very much. God bless you.